Hey everyone, welcome back to my YouTube channel forbiddencoder.tech. My name is Pankaj and I hope you all are doing extremely well. Today we are talking about something that confuses almost every developer at some point in their career, and that topic is JWT versus OAuth. You have probably heard the statement, should I use JWT or OAuth? And also like JWT is better than OAuth or OAuth is more secure than JWT. But here is the truth. JWT and OAuth do not do the same job. Comparing them is like comparing a key with a security system. So let me be very clear from the beginning. JWT is a token and OAuth is a system. They solve different problems. And I'll explain this in very simple and practical way. No heavy theories, no boring definitions. Okay. Imagine a hotel. You are the user, the hotel room is your protected API or data. Now let's map thing properly. JWT is like a hotel room key card. The key card contain information such as which room you can access, how long the key is valid, a digital signature that prove it is genuine. Now notice something important. The hotel or swipe machine does not remember you personally. When you show the key card, the hotel only checks is this key valid or is this key expired or is the signature correct. Only this thing it will verify. If everything's work properly, doors will open. Otherwise, access is denied. This is how exactly JWT works. This is where most people get confused. Let me clear it up. JWT does not log you in. JWT does not decide your permissions. And JWT does not manage as user. JWT only carries information securely, like the room key card. Okay. It is simply a container. You can think of it as like a packet of user ID, role, expiry time. That's it. The server just verify the token and move on. Now let me explain you the JWT flow. First of all, the user logged in, server will verify the credential. After verifying the credential, if credential are okay, server will issue a JWT token. Then the token will send to the client and client will store the token somewhere in local storage or cookie wherever they want, and then client will send JWT token with their every request. After that, server will verify whether the JWT token is valid or not, and if it is valid it will provide the data, and if it is not valid it will not provide the data. So here in this scenario, no database session is stored, no server memory, just token verification has been happened. Okay, so that's why JWT is very popular because it is stateless. Stateless means server does not store any session. This server simply validate the token. Okay, now we will talk about the pros of JWT. First of all, it is very fast. Second thing, with the help of JWT, you can scale quite easily, and JWT works great with microservices because user services, order services, there are different kind of microservices architecture over there. So JWT works great with them, and it also work well with the APIs also. Now if JWT has pros, so it is definitely possible that it might have some cons also. A JW server issue a JWT token, it is hard to revoke that token. If the token is stolen, the attacker can act as the user until it get expire. For example, if the token is valid till 7 days, so we have to wait till 7 day if the token is leaked. So JWT is powerful but risky if misused. Now let's talk about OAuth. First, let me make the biggest myth. OAuth is not a login. OAuth only answers one question. Is this application allowed to access this data or not? Nothing more than that. You have seen many times you allow Swiggy to access your email. Okay, Google email, think of it as you allow Spotify to read your profile. What Google is doing here in this case, Google is saying that I trust this app to access only this much, nothing more than that. That trust and permission system is OAuth. Why OAuth feel complicated to you? Because it is used by large system. Sorry, it is designed for large system, and yeah, it is also used by big organization also. Help us to manage multiple application, and it has obviously a third party access, and OAuth assume that you don't trust everyone. You want fine grain control and you want the ability to revoke access anytime. That is why it feels heavy. Means in JWT, once token is issued, it is heavy, means it is difficult to revoke that token. But in OAuth, this is not the case. That's why it feels heavy. This is where the most confusion happens. When you click on login with Google button, you think you have seen that login with Google button
in various applications or websites. In that scenario, Google is logging. You are thinking that Google is logging me with using OAuth. That is not exactly the case. What actually happened is OAuth only handle permission. There is behind the scene one thing in OAuth, that is OpenID Connect, that will handle the identity part. Now talking about OpenID Connect, it sit on the top of the OAuth. OIDC answer one simple question: who is this user? It provide you user ID, email, name, something like that. Okay, without OpenID Connect, OAuth only talks about application, nothing more than that, not about human beings. But with the help of OIDC plus OAuth, it will talk about app as well as human. Okay, so in simple term, you can think of it as like OAuth is equals to access control and OpenID Connect is equals to user identity. Now let me finally summarize the thing for you, so that you can, if you might get asked this question in interview, you can give the answer to them. JWT is in token format and that carries data and used for stateless authentication. OAuth is an authorization framework decide what an app can access. Okay, and OIDC is an identity layer, tell who is the user. Now JWT and OAuth are not a competitor, they often work together. Means I'll also tell you how they can work together. Let me take you to my home screen. Now let me explain you the flow with the help of example. Okay, सो ये मैं एक मेरी पोस्टर पार्लर एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई है। तो इसमें हमने दोनों यूज़ किया हुआ है, JWT भी यूज़ किया हुआ है और OAuth मैकेनिज्म भी यूज़ किया हुआ है। तो अब कैसे यूज़ किया हुआ है मैं बताता हूँ। जो हमारा फ्रंट एंड है उससे यूज़र पहले लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेगा, तो उससे हमें एक आईडी टोकन जनरेट होके मिलेगा अगर वो लॉग्ड इन कर लेता है तो अपने जीमेल वगैरह से। तो हमें वो आईडी टोकन मिलेगा, हम वो आईडी टोकन अपने बैकएंड पे सेंड करेंगे। और बैकएंड क्या कर, तो सबसे पहले तो वो वेरीफाई कर रहा है गूगल के टोकन जो उसे मिला हुआ है फ्रंट एंड से, उसमें से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ईमेल, नेम एंड ऑल थिंग्स, और एक्सट्रैक्ट करके एक टोकन जनरेट कर रहा है। ठीक है, और टोकन भी दो जनरेट कर रहा है, एक नहीं, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों जनरेट कर रहा है। एक्सेस टोकन शॉर्ट लिव टोकन रहेगा कि एक्सपायरी हमने 2 मिनट कुछ तो भी रखी हुई है, और जो हमारा टोकन है वो उसकी एक्सपायरी हमने 7 डेज तक रखी हुई है। ठीक है, तो वो दोनों जनरेट करके फ्रंट एंड को भेज देगा और फ्रंट एंड पे स्टोर हो जाएंगे कुकीज़ में। तो अगर मैं आपको ये सिनेरियो पूरा करके दिखाता हूँ, तो उससे पहले आप समझ जाओ फ्लो। तो दोनों सेव हो गए, तो उसके बाद अगर एक्सेस टोकन जो है हमारा 2 मिनट का ही शॉर्ट लिव टोकन है, अगर वो एक्सपायर हो गया है, तो अगर 2 मिनट बाद यूज़र लॉग इन कर रहा है, तो हम साइलेंटली एक रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड साइड से, मतलब फ्रंट एंड से बैकएंड पे रिफ्रेश करने के लिए। तो रिफ्रेश टोकन क्या करेगा, एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करके वापस से फ्रंट एंड को भेज देगा और ये काम पूरा साइलेंटली होगा। तो इससे जो हमारा फ्लो है वो काफ़ी स्मूथ हो अभी वो एक्सेस। ओके, तो ये मेरी ऐप है, अभी मेरे पास ना एक्सेस टोकन है ना फिर रिफ्रेश टोकन है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि एक रिक्वेस्ट गई होगी रिफ्रेश टोकन करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास रिफ्रेश टोकन है नहीं, तो ये रिक्वेस्ट फेल हो गई होगी। चेक इट आउट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो google.me। अच्छा, अभी नहीं गई है, ओके फाइन। तो अगर मैं इसको करता हूँ बाय माय बुक और इससे लॉगिन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये एक टोकन गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है लॉगिन की, और ये सारी चीज़ें लॉगिन हो चुकी है। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेस टोकन भी स्टोर हो गया होगा कहीं पे, रिफ्रेश टोकन, टोकन, एक्सेस टोकन। ओके, अब ये टोकन को मैं हटाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से। ओके, टोकन को हटाया मैंने और इसको एक बार रिफ्रेश मारा। नाउ यू विल सी जो हमें मिलेगा वो, अभी नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेस रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन नहीं है। ओके, तो 2 मिनट का शॉर्ट लिव टोकन था, हम 2 मिनट रुके नहीं, मैनुअली हटा दिया, तो ये क्लिक करेगा तो एक्सेस टोकन दोबारा आ गया यहाँ पे। कैसे आया, क्योंकि रिफ्रेश वाला राउट हिट हुआ है, राइट। तो रिफ्रेश वाला राउट हिट होने के कारण उसने एक्सेस टोकन जनरेट करके वापस फ्रंट एंड पे भेजा है, और फ्रंट एंड ने दोबारा से एक्सेस टोकन जनरेट करके मतलब यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर ली है। तो इस तरीके से JWT और OAuth को हम कंबाइन यूज़ करके एक स्मूथ ऑथेंटिकेशन फ्लो बना सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and if you found this content very helpful, so please like this video,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the